What's up you guys, welcome back to my YouTube channel. So आज के इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ फुल फेस फर्स्ट इम्प्रेशन एंड या देयर वर मोस्टली हिट और मिस. आज का मेकअप मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा. इट्स okay, it's not that bad but it's not good. Like I'm not in love with this look. ओके सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो हाय, दिस इज अंशु. मुझे मेकअप, स्किन केयर, फैशन बहुत पसंद है और उसी के अराउंड ये चैनल है और मैं हर दिन अपलोड करती हूँ अगर सब सही रहा तो. एंड या I create content around affordable makeup. So if that's interest you, please consider subscribing. जल्दी से start करते हैं ये वीडियो. Okay. First of all, let's talk about this top. ले top I will try to insert ना, मुझे पहनना ही नहीं आ रहा. So yeah, I'm kind of using this as a shrug and it is looking nice. I have this crop top and I will insert that also. And yeah, अब कपड़ों के ना haul मैं हमेशा भूल जाती हूँ. Like so, yeah. That's why मतलब try on haul types नहीं होता मुझसे. I will try to do that but yeah. I love fashion but fashion videos बनाना तो easy नहीं है. Like you have to try every piece, then pose and all. तो उसको film करने के लिए I think मुझे एक separate day चाहिए होगा. Like okay, enough with the blabbering. Let's get started with the video. Okay, so I must say आज के products बहुत सारे misses भी रहे हैं and I'm not in love with this look. And yeah, let's just talk about every product that I tried today. So start करते हैं एक primer से. So I will try to insert everything here. So ये है रेने का primer. Like जब मैंने हाथ पे swatch किया था मुझे लगा था ठीक है. First of all, this dropper applicator is doing nothing. इससे इतना product disperse नहीं हो रहा था. ना जब मैं हाथ पे swatch करती हूँ मुझे हल्का सा glow दिखता है. You can see there is a little bit of sheen जो कि visible है ऐसा ही. And yeah, you can see there is a little bit of sheen and kind of giving me that no makeup look vibe. It's okay, like not the best glow primer. And yeah, I was like, it's a mediocre product with a like a hefty price tag. ये mini है और ये काफी expensive है. full size mini retails for mini is 10 ml and it retails for 599 rupees. Now you can decide if you want this kind of like almost nothing glow, you can go for it. I am a stroke cream lover. Like I have a lot of hydrating primer जिसमें बहुत glow है, so it is a hard pass for me and it is expensive in my opinion, okay. So I kind of regret it buying और मैं एक regret video बना रही हूँ. Oh my god, like हमेशा मेरे साथ ये होता है कि मैं regret video कैसे बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत research करके कुछ खरीदती हूँ because it's my money, no brand is paying me, no brand is sending me PR. So yeah, I have kind of a lot of disappointing product and my wallet is crying a lot. Okay, so yeah, आज मैंने बाल स्ट्रेट नहीं किए. मैंने कहा कि बहुत हो गया, like let's do something natural and this is my natural hair texture. And you guys, I have highlighted my hairs and ये sunlight में इतने प्यारे लगते हैं but ऐसे दिखते ही नहीं है. So I was like, okay. So moving on, the next project is this renee की foundation. Now निहारिका दीप्ति देसिकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ की थी. मैंने इसलिए लिया because it's kind of expensive. It retails for 750. तो like इतना सस्ता भी नहीं है पर इतना महंगा भी नहीं है and I love it. Like this is good. This is good stuff. But ये थोड़ा separate होता है. अब जो भी product ना ऐसे separate होते हैं बड़ा अजीब लगते हैं. Like this is the first time I have used it, पर ऐसा लग रहा है मैंने कितना यूज किया है. So it's kind of deceiving because I'm a project planner तो मुझे और लग रहा है कि it's kind of deceiving कि मैंने इसे एक बार यूज किया. लग ऐसा रहा है कि मैंने इसे काफी यूज किया है. So okay, so ये foundation ना जब मैंने apply किया था I was loving the base. I was like yeah, this is my kind of base. And then the concealer ruined it. We are going to talk about it. Okay, so
सो ओके, सो ये फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको एक मीडियम कवरेज कंसीलर के साथ बताऊंगी। अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा। या यू कैन सी माई pigmentation peeking through, like a little bit of acne scar, so कुछ तो दिख रहा है। बट या इट्स माई काइंड ऑफ फाउंडेशन जिसमें कवरेज है बट बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं है। इट्स वेरी डूई, वेरी स्किन लाइक, वेरी स्लीमलेस, और ये स्किन टेन नहीं है। एंड इट्स नॉट इवन सीरम फाउंडेशन। एंड जो भी है ये वेटलेस फॉर्मूला विद हाइलोरॉनिक एसिड। ओके, दैट्स व्हाई इट इज गुड। इट इज गुड यू गाइस। और मैंने ये नोटिस किया है जिसमें भी ना, जिस भी मेकअप प्रोडक्ट में कोई स्किन केयर होता है वो थोड़ा अच्छे परफॉर्म करते हैं। सो ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। एंड या सो आई विल गिव इट अ बिग थम्स अप। इस 750 की है बट यू कैन ट्राई दिस। एंड या this shade is a good match. I was like really impressed with this shade match. And इसमें कम शेड हैं but क्या कहूँ मैं, नई ब्रांड को I can still give them pass, like नई ब्रांड्स जो हैं। and like conglomerates, I have complaints with conglomerates जिनके पास बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है, अति में पैसा है। so yeah, उनको शेड्स ज़रूर बनाना चाहिए। by the way you guys, नायका की एक महंगी फाउंडेशन आई है and I was like should I buy it? Do let me know, do you want the review? and it is matte foundation, तो will I like it? Nah, never. But if you want a review, I can try it. Okay, so yeah, moving on is the concealer. I have to talk, guys. This is like a lot of coverage, and can you guys see? It's separating here. Can you guys see? I hope it is creasing. It is separating, but इतना मैट है ना, मेरी हिम्मत नहीं है सेट करने की। I hope, यानी see? So ये separate हो रही है। I regret it. I regret buying this. And why I did that, क्योंकि ये बहुत हाई कवरेज है। मैं क्या एक्सपेक्ट करी थी, मैं क्यों पसंद करूंगी। बट आई थिंक इनसाइड का एच डी कंसीलर अच्छा है, तो आई थॉट, हालांकि वो भी थोड़ा फट जाता है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है ना, मैं सेट भी नहीं करती हूँ, फिर भी थोड़ा सा वो भी फट रहा था। मैंने एक दिन नोटिस किया। आई वाज लाइक in pictures दूर से I was looking good, in mirror दूर वाले मिरर में also I was looking, and I saw a close up पास वाले मिरर से। I was like oh my god, and same with this one। शायद कैमरे में मेरा फेस अच्छा लग रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगा इन पर्सन ना। तो जब मैं अपना मिरर उठा रही हूँ, मेरा ये मेकअप हटाने का मन कर रहा है। सो if you ask me, I am not at all happy with the look, and it is patchy, okay, और yeah, separating on me, nose पे भी separate हो रहा है। no, and around my lips, especially around my upper lips, okay, it's separating a lot। oh my god you guys, this look is looking horrendous in person, like up close it is looking very bad you guys। oh my god, पता नहीं कैमरे पे कैप्चर हो पाएगा या नहीं। I will try to insert, sunlight है नहीं आज, हट रहा है बुरी तरह से ना, सेपरेट हो रहा है। oh my god, it's a no। okay, so yeah, बहुत हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज द ब्लश। इसका अब मैंने पर्पल ब्लश ट्राई किया था और इस मॉप टॉप के साथ वो जाता, बट आज मुझे ये ट्राई करना था। इट इज़ अ गुड ब्लश, बट ये थोड़ा सा क्लैश कर रहा है, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी नाइस। अगर मैंने ऑरेंज टॉप पहना होता तो वो बेटर लगता। ओके, सो प्रोडक्ट वाइज इट इज़ अमेजिंग and you have to work a little fast with it, but it is very good product। very वो बहुत ही ज़्यादा ये पिगमेंटेड है,
easy to work with and nude shade भी इतना अच्छा pigment दे रहा है and yeah, I just love it. थोड़ा सा सेट कर लिया था मैंने इनके अदर ब्लश से. आई थॉट कि अंडरटोन सही बन जाए बट अभी भी बहुत ऑरेंज लग रहा है. इट्स पीची न्यूड और वो टॉप के साथ थोड़ा सा क्लैश कर रहा है बस. बट या, इन माई ओपिनियन दिस ब्लश इज रियली अमेजिंग, रियली गुड क्वालिटी. पिगमेंट है इसमें अच्छा खासा, blend होता है. You have to work a little fast, so yeah, apply a dot here, blend it, then apply a dot here, then blend it. Otherwise it's a very good product. I love it. Okay, now moving on to the eyes, you guys. I have removed this eye makeup 3 times and tried to use this disastrous shadow. And I saw Prakriti doing a short about these because ये duochrome दिख रहे हैं, उसने भी यही सोच के लिया. मैंने 2 शेड उठा लिए बिना इसको टेस्ट आउट किए. आई रिग्रेट इट. मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? लाइक आई रिग्रेट इट एंड आई रियली वॉन्ट दिस टू वर्क क्योंकि मेरे बहुत पैसे लगे हैं. आई एम सो डिसअपॉइंटेड. एंड ये duochrome बिल्कुल नहीं है. इट इज़ काइंड ऑफ डिसीविंग. ये बॉटल में duochrome दिखता है. यू कैन सी क्लियरली duochrome दिख रहा है. पर्पल ब्लू, एंड पर्पल ब्लू मुझे बहुत पसंद है. It is horrendous product. This product was not blending at all. And when I tapped it, it was removing the base. So I will try this with eyeshadow primer. शायद कुछ हो जाए, but अभी के लिए इस no, stay away from this, especially if you are beginner ना, बहुत दिक्कत होगी. And I was like, अब मैं क्या करूँ, कैसे इस eyeshadow को सेव करूँ. So मैंने ये कंसीलर यहाँ 3 बार अप्लाई किया है. I was so disappointed. फिर I was like कि चलो Swiss Beauty, because ये प्रोडक्ट ना ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये स्विस ब्यूटी वाले की तारीफ नहीं की हो. तो आई अप्लाइड मार्स का दिस पैलेट. दिस इज द मॉफ वेरिएशन और इसका ये शेड जो मैं पैन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने वो अप्लाई किया. टॉप से मैच भी था एंड आई वेंट विद दिस शेड. दिस इज रोज गोल्ड. अमेजिंग. बिल्कुल पैची नहीं है, बहुत फटाफट ब्लेंड होता है और तब प्यारा लुक है. वाओ, आई एम ऑब्सेस्ड विद द आई लुक. रियली प्रीटी. ओके, आई विल हाईली रिकमेंड यू. आई थिंक ये सबके पास ही है, मेरे पास ही नहीं होगा. सो इट्स वेरी पॉपुलर, लाइक अ कल्ट फेवरेट फॉर अ रीजन. जैसे स्विस ब्यूटी का कंसीलर है वैसे उसके ये आई शेडो है एंड आई थिंक दे वर्थ ऑल द हाइप यू गाइस. दे आर so good. So yeah, मेरे पास 2 शेड हैं. आई एम गोइंग टू स्वॉच दिस. दिस इज ग्रे सॉर्ट ऑफ शेड. ये भी चल जाता है इस टॉप के. वाओ, I'm looking forward to try this. And this is the rose gold जो मैंने आज ट्राई किया and amazing. like मैं इसके वॉशेस जरूर से ट्राई करूँगी. I was so happy. और ये ना बहुत easy to work with है. like seconds में blend होता है. you have to just swipe it and tap it a little. बहुत है. and I would say कि
कुछ नहीं लगाना हो, सिर्फ ये भी लगा लोगे ना, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस, लाइक ये अकेले ही सब पे भारी है. इट इज अमेजिंग. So yeah, I will highly recommend you these shadows. Okay, now moving on to the last product is the lipstick. So ये है MyGlamm की पॉश HD लिपस्टिक, और ये बहुत क्रीमी है, ये बहुत sheer क्रीमी लिपस्टिक है. नहीं इतनी शेड नहीं है, पर क्रीमी लिपस्टिक है. या ये दिस इज द शेड न्यूड मॉव. ये बड़ा प्यारा पिंकी मूवी न्यूड है, एंड आई लव द शेड एंड द फॉर्मूला. इफ यू हैव ड्राई चैपी लिप्स ना, you will really enjoy it. अगर matte formulation पसंद है, stay away from this. And the packaging is cardboard, so I am giving you a heads up, you know, this is cardboard. It's so pretty. As a purple and blue lover, I am all for this packaging. It is adorable. Okay, so that's pretty much it for this video. अगर मुझे कुछ recommend करना होगा तो definitely Swissbeauty के ये eyeshadow foundation renee की, it is good. And then of course the lipstick. And yeah, ये तीनों product मैं recommend करूँगी. And also the cups and lashes, blush is also nice. So that's pretty much it for this video. Do let me know in the comment section अगर इनमें से कोई product try किया हूँ. Do let me know और कौन से product के review you will like to watch. And yeah, I shall see you in my next one. Bye.